एकदम खूब सारा पैसा कमाने की गुंजाइश. IPS means rob, the police, the brute force. Foreign service is sophistication, right? Then used to come money. IRS, IT used to be usually the higher choice, and custom excise used to be the next. In last 10 years, 5 years actually, it has reversed. Now, IRS, custom excise, which is indirect taxes, is considered higher than IRS income tax, direct tax. Can you tell me why? Any idea? वो तो इन दोनों को लोग पैसा कमाने के लिए लेते हैं. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो, सॉरी, एक बार मैंने ऐसा बोल दिया था, वो वीडियो में चला गया. उसके बाद उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सर्विसेज एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ बाकायदा पत्र लिखा. So let us not get into why, but you need to understand that in last 5 years, the faceless assessment has come into income tax, which is basically AI-based assessment, where the assessment officer does not know कि वो किसका assessment कर रहा है. नाम पता नहीं होता, केवल income tax return आती. So the idea of getting something money under the table has gone down. And because of this, now people have started believing कि IRS IT क्यों बने, इनकम टैक्स में, रेवेन्यू में क्यों जाना है. अभी कस्टम सेंट्रल एक्साइज में अभी भी गुंजाइश है, इसलिए it has become a higher. So you need to understand what are the factors that leading to the government job. And that's why I believe, please find out your calling. अगर आपको लगता है कोटा वोटा में बहुत मेहनत कर लिया, आराम से बैठ के पैसा कमाना है, welcome to the government job. लेकिन if that is not the criteria, and you want to live an honest life, which I, as a teacher, I will always advise you to do so. In that case, civil services may not be the only avenue you should look after, but then you cannot change society overnight. क्योंकि जैसे ये IAS बनते, दहेज में आपकी जो कीमत है, वो 50 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती. Everything that was useful has been said. I would just advise you guys, one, you guys are very young. Second, you have a lot of exposure. Okay? So, again, a little bit. Am I audible? Check. Yes. आप देखिए, बहुत मुश्किल बात नहीं है. मैंने एक से ज़्यादा बार इस बात को कहा है, इसलिए शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा दोहराना. वेलकम. अब बहुत दूर की बात नहीं है, क्योंकि जैसे अभी पारिजात ने कहा कि कंसल्टेंसी अंतर्मुखी कहते हैं, इंट्रोवर्ट, और इन्फ्लुएंसर आप समझ सकते हैं कि उन्हें तो क्या क्या करना पड़ता है. तो कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज समथिंग दैट आई वांट यू टू लर्न. There are two things in response to the question, which I suggest that you should take very seriously. One is, मान लीजिए कि आप IIT रुड़की में हैं और Great panel. We all loved it. We all got a lot of guidance and a lot of things that we're actually looking for to learn from the session from different sectors. That was kind of great.